Now students, we are starting with the chapter electricity. That is electricity. So what do you mean by electricity? Electricity is nothing. It is a source of energy due to flow of charges. When the charges flow, you say some current is there. Okay. So first topic which we are going to discuss is your electric current. Electric current, which is denoted by I, it is defined as rate of flow of charges. We can say when the charges flow in a definite pattern, that is a wire, okay, then we say there is a current in the wire. So it is defined as rate of flow of charges. So mathematically, current rate is anything which changes with respect to time. That is, can I say it is charge upon time, where current is depicted by Q, I, and charge is depicted by Q and the time depicted by T. So, the SI unit in which the current is expressed is your ampere, and charge is expressed in coulombs and time is expressed in seconds. So when the charge is expressed in coulomb and time is expressed in second, then the SI unit of current is ampere. So I can say 1 ampere is 1 coulomb by 1 second. So how will you define 1 ampere? So when 1 coulomb charge flow through a conductor in 1 second, then the current is said to be 1 ampere. Okay, so this is how we define 1 ampere. So what is electric current? Electric current is nothing, it is rate of flow of charges. So when the charges, they move in a definite pattern, suppose this is a wire, there are the charges moving in a definite pattern, then we say there is a current in the wire. So mathematically the current is nothing, it is charge upon time. So where current is denoted by capital I, charge by Q and time by T. So when charge is expressed in coulombs and time is expressed in seconds, so the SI unit of current comes out to be ampere. So the SI unit, so I can say SI unit of current is what? Amperes. Okay? So I can say 1 ampere is equal to 1 coulomb by 1 second. So if I say define 1 ampere, how will you define? So when 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second, then the current is said to be 1 ampere. So there is an instrument which is used to measure current in the circuit. That's your ammeter. Okay, that's an instrument which is used to measure current in the circuit, and it is always connected in series. Series means conductor के साथ लगाया जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं series combination, and we are going to discuss in detail later in this chapter itself. Okay, so the current is nothing, it is rate of flow of charges. One more thing you have to note, that you can calculate total charge over a body by the formula Q is equal to Na, where N is the number of electrons crossing through the wire and E is the
charge on the electron, E की वैल्यू क्या होती है, चार्ज विच इज फिक्स्ड 1.6 into 10 to raise to power minus 19 coulombs. So किसी भी बॉडी के ऊपर हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं. वो टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं, Q is equal to NE पुट करके, where N is the number of electron passing through the wire and E is fixed, that is the charge on the electron, which is 1.6 into 10 to raise to power minus 19 coulombs. So now regarding this concept we are going to solve numericals. Just focus now. So let's start with the numericals now. What it says, calculate charge on a conductor carrying 10 ampere current for 2 seconds. Okay, so what is given to me, the value of current as well as the time. So I is nothing, it is 10 ampere and t is 2 seconds. I have to evaluate Q. So I is equal to Q by T. So Q comes out to be I into T, which is 10 into 2. So my answer comes out to be 20 coulombs. Now the next question, if I have calculate the amount of charge in a wire carrying 60 ampere current for 3 minutes. So what is given to me here? First of all, the value of again the current and the time, but the time is now in minutes. So what you have to do it, you have to convert it into seconds by multiplying it by 60. So that is 180 seconds. So again I is equal to Q by T. So Q comes out to be I into T, which is 60 into 180. So what I get here? So I get 10800 coulombs. So अगर time minutes में दे रखा है, then you have to convert it into its SI unit, that is your seconds. Then you are going to put the value in the formula. Clear? Moving on to third numerical. Calculate the number of electrons constituting 2 coulomb charge. So what is given to me? Q is given to you 2 coulomb. I have to evaluate N. So Q is equal to क्या होता है बेटा? NE. So I have to evaluate N. So that is 2 here. So N I don't know, and this is fixed 1.6 into 10 to raise to power minus 19. So N comes out to be 2 by 1.6 into 10 to raise to power minus 19. So this negative power ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस. So I keep it like this, 2 by 1.6 into 10 to raise to power 19. I am taking it to the numerator, so the value of the power becomes positive. So I remove this, I got what, 20 here. ठीक है, तो 20 by 16 into 10 to raise to power 19. So if I cut off, ठीक है, that becomes 5 and that becomes 4. So this gives me 1.25 into 10 to raise to power 19 number of electrons. So what I have to evaluate, calculate the number of electrons which constitute your 2 coulomb charge. So what is given to me? First of all, the charge is given to me, that is 2 coulomb. I have to evaluate N, ठीक है,
और जिसमें मुझे पता है E की वैल्यू फिक्स होती है which is 1.6 into 10 to raise to power minus 19. So I have put in the formula Q is equal to NE and I have to find out the value of N now. Question 4. Calculate the number of electrons crossing a wire carrying 4 ampere current for 2 seconds. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स crossing a wire carrying 4 amperes for 2 seconds. So what is given to me? First of all, I, that is your 4 ampere. ठीक है, then T is given to me 2 seconds and I have to find out what N. N तो सिर्फ एक ही फॉर्मूले से निकल सकता है, that is Q is equal to NE. तो उसके लिए पहले मुझे Q पता होना चाहिए, तो पहले मैं I और T दिया हुआ है तो पहले Q निकालूंगी. तो I is equal to Q by T, so Q comes out to be I into T. So what I get? 4 into 2. So my answer comes out to be how much? 8 coulombs. Now I have to evaluate N. So put inside it Q is equal to NE. So that is 8 N into 1.6 into 10 to raise to power minus 19 here. So N comes out to be 8 by 1.6 into 10 to raise to power minus 19. तो ये पावर ऊपर चले जाएगी तो प्लस हो जाएगी 8 by 1.6 into 10 to raise to power 19. So this goes off. ठीक है, तो 16 that is 5 सा. ठीक है, so 5 into 10 to raise to power 19 are the number of electrons passing through a wire carrying 4 ampere current for 2 seconds. Clear? I'm rubbing it off. Okay, question number 5. Calculate the amount of current in a wire carrying 1 lakh electrons for 20 seconds. Okay, so it is carrying how much number of electrons? That's 1 lakh. I have given in the question. So what is given in the question? That is number of electrons that are going to be how much? 1 lakh. Okay, and time is given to me how much? 20 seconds. I have to find it out. What? The I. So formula which we are going to use, I के लिए formula क्या होता है? I is Q by T. तो where मुझे Q पहले निकालना पड़ेगा, Q is equal to NE से, because मुझे क्या दे रखा है? N given है and E आपको पता है फिक्स होता है, तो मैं पहले Q निकाल सकती हूँ. ठीक है, so first I am going to evaluate Q. Q is your what? Q is equal to NE. So that is 1 lakh into 1.6 into 10 to raise to power minus 19. So can I write this value as 10 raised to power 5? ठीक है, into 1.6 into 10 to raise to power minus 19. तो ये दोनों क्या हो रहे हैं बेटा? मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? प्लस. तो 1.6 into 10 to raise to power minus 19 क्या हो जाएगा? plus 5. So this becomes 1.6 into 10 to raise to power minus 14 coulombs. That is the value of Q. I have to evaluate I. I is what? Q by T. So Q is 1.6 into 10 to raise to power minus 14 by how much?
20. So this gives me what? 1.6 by 20 into 10 to raise to power minus 14. So what I get here? This goes with 2 की टेबल से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 8 and that 10. So this I got 0.08 into 10 to raise to power minus 14 coulombs. Or I can say 8 into 10 to raise to power minus 16 coulombs. So that, sorry, not the coulombs, it's ampere. My fault. That's an SI unit of current. So these are the numericals based on these concept, that is electric current. So I will send you more questions for the practice. Now I am switching over to next topic, which is potential difference. On PD, I write it like this. That's your voltage. Okay. So before starting the concepts, let's talk about some practical application, which is seen on the board for that. So if I have 2 tumblers like this, and I have connected the 2 tumblers by a pipe. Okay. So what I'm going to do is I'm going to fill water in the 1 tumbler. So what is going to happen? As you must be aware, the water is going to move here to this tumbler number 2. That's your 1 and this is your 2. So automatically the water is going to move to tumbler 2. अपने आप पानी वहाँ जाएगा, तब तक जाएगा जब तक दोनों की हाइट क्या नहीं हो जाती, इक्वल. And once their height are equal, the process is going to stop. That's the law of nature. That is the equality. क्या होगा अगर मैं टम्बलर 1 में पानी डालती हूँ तो वो पानी अपने आप टम्बलर 2 में जाएगा, ठीक है, और वो तब तक जाएगा जब तक दोनों की हाइट क्या नहीं हो जाती, इक्वल. ओके. अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ क्या किया, एक मोटर लगाई. ओके, आई एम अप्लाइंग अ मोटर. वो क्या कर रही है, टम्बलर 2 पे मोटर लगाई है, वो टम्बलर 2 से पानी पिक करके टम्बलर 1 में डाल रही है. ओके. तो मैं क्या कर रही हूँ, उसके ऊपर वर्क डन कर रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ वाटर पंप. ठीक है. पंप क्या कर रहा है, पानी टम्बलर 2 से उठा रहा है, ठीक है, और टम्बलर 1 में डाल रहा है. ठीक है. जब मैंने मोटर ऑन करी, मेरा पर्पस शुरू हो गया, मैकेनिकल वर्क डन शुरू हो गया. वो टम्बलर 2 से पानी उठा के टम्बलर 1 पे डाल रहा है. ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दोनों की हाइट इक्वल हो. ठीक है. इससे क्या होगा, दोनों तरफ हाइट इक्वल नहीं होगी. ठीक है. और मैं पानी यहाँ पिक करके टम्बलर 1 में थ्रो कर रही हूँ. अब दोबारा हाइट में डिफरेंस आएगा तो पानी अपने आप यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पानी आ रहा है, फिर मोटर उसको पिक करके यहाँ थ्रो कर रही है. सो दिस इज गोइंग टू हैपन इन अ क्लोज्ड लूप फॉर्म. ओके. सो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ से यहाँ तक पानी जो टम्बलर 1 से टम्बलर 2 तक जा रहा है वो नेचर कर रही है. ठीक है. अपने आप पानी जा रहा है. बट 2 से 1 अगर मैं नेचर के अगेंस्ट जाना चाहती हूँ तो मुझे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा. आई हैव टू डू वर्क ओवर इट. एंड इसमें वर्क डन के लिए मैंने किसको चूज किया है, एक पंप को चूज किया है जो पानी टम्बलर 2 से पिक करके टम्बलर 1 पे डालता जा रहा है. सच दैट कभी भी दोनों की हाइट इक्वल नहीं होंगी और ये प्रोसेस चलता जाएगा. टम्बलर 1 से टम्बलर 2 तक पानी आया, 2 से मैंने पंप करके 1 में डाल दिया, फिर दोनों में हाइट में डिफरेंस क्रिएट हो गया. सो 1 से 2 में अपने आप जा रहे हैं. एंड दिस प्रोसेस गोज ऑफ इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड लूप. तो मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली एक वर्क डन कर रही हूँ. किसके ऊपर, पानी के ऊपर. वैसे ही सेल की बात करें तो उसमें क्या होते हैं बेटा, 2 टर्मिनल होते हैं. वन इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड अदर इज नेगेटिव. दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल. इस पे चार्जेस क्या होते हैं,
पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ज्यादा होता है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कम होता है, बिकॉज इट्स नेगेटिव। ठीक है, सो दैट देयर इज ऑलवेज अ चार्ज डिफरेंस। इनके बीच में हमेशा एक क्या होता है, चार्ज डिफरेंस। अब इस हाइट के डिफरेंस की वजह से ऑटोमेटिकली पानी मूव कर रहा था। अब सेल का काम क्या है, इस चार्ज डिफरेंस को क्रिएट करना। अगर वो चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो चार्जेस अपने आप मूव करना शुरू कर देंगे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इस चार्ज डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए जो सेल है वो क्या करता है, वर्क डन करता है। वो एक तरफ चार्जेस को ज्यादा रखता है और एक तरफ चार्जेस को कम रखता है, जिससे कि क्या हो, चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जाए। एंड वंस द चार्ज डिफरेंस इज क्रिएटेड, चार्जेस अपने आप मूव करना शुरू कर देते हैं। तो सेल का काम क्या है, उस चार्ज डिफरेंस को क्रिएट करना। अब मैं यहाँ पे हाइट का डिफरेंस क्रिएट करती जा रही थी, जिससे कि पानी अपने आप टम्बलर 1 से टम्बलर 2 तक जा रहा था, मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा था। वैसे ही सेल क्या कर रही है, दोनों टर्मिनल्स पे चार्जेस का डिफरेंस क्रिएट कर रही है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रखती है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज कम रखती है, जिसकी वजह से चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और चार्जेस मूव करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली द सेल इज डूइंग वर्क ऑन चार्जेस, दैट इज व्हाई वोल्टेज इज डिफाइंड एज वर्क डन अपॉन चार्ज। इट डू वर्क ओवर द चार्जेस, एक तरफ चार्ज को ज्यादा रखती है, एक तरफ चार्ज को कम रखती है, जिसकी वजह से एक चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और इस डिफरेंस की वजह से चार्जेस मूव करना शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिकली फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी का काम क्या है, वर्क डन करना। ठीक है, सो वोल्टेज इज नथिंग, इट इज वर्क डन अपॉन चार्ज. So I can say the potential difference between the 2 points is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one place to another. Okay. So voltage is depicted by capital V and work done by W and charge, as you know, by Q. So अगर मेरा work as you know it is expressed in joules, चार्ज किस में एक्सप्रेस होता है बेटा, कूलम्स में, तो एसआई यूनिट इसकी क्या आती है, वोल्ट्स, दैट इज एन एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, सो कैन आई से 1 वोल्ट इज 1 जूल बाय 1 कूलम। ओके, सो हाउ कैन वी डिफाइन 1 वोल्ट, the potential difference between the 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge between the 2 points. सो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में ही डिफाइन होता है, एक तरफ पोटेंशियल ज्यादा होती है और एक तरफ पोटेंशियल कम होती है। ठीक है, सो what I get, we depict the voltage or you can say the potential difference by capital V. वर्क डन को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है और चार्ज को Q से। If the work done is expressed in joules and charge is expressed in coulombs, so the SI unit comes out to be volts, that is depicted by capital V again. So how will you define 1 volt? If 1 joule of work is done over a 1 coulomb charge, then we say it is 1 volt, or you can say the potential difference between the 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge between the 2 points. Okay, so what is now the instrument which is used for the measurement?
दैट्स योर वोल्ट मीटर जो यूज किया जाता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल लगाया जाता है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस later in this chapter what is a parallel combination. First you must know it is connected in parallel, so we are going to discuss later in this chapter ki what is a parallel combination. Okay, so that's your potential difference. We are going to discuss numericals based on now that. Moving on to numericals. Okay, calculate the amount of work done by 5 coulomb charge at a potential difference of 20 volts. Okay, so what is given to me here? Q, that is going to be 5 coulomb. Potential difference V is 20 volts and I have to evaluate what? W, that is the work done. So what would be the formula used? It would be V is equal to W by Q, or W is equal to V into Q. So can I say 5 into 20, which is going to be 100 joules. So how much work is that? 100 joules. Question number 2. Calculate the amount of work done by 8 coulomb charge in moving from point A at 200 volts to point B at 310 volts. So what I have to evaluate? Calculate the amount of work done by 8 coulomb charge in moving from point A at 200 volts to a point B at 310 volts. So first of all, you are going to evaluate V by VB minus VA, that is final minus initial. So you are going to evaluate first the potential difference. So that is going to be 310 minus kya ho gaya? 200. That is going to be 110 volts. Now I have to evaluate W and Q is given to me 8 coulombs. So V is equal to W by Q, or W is equal to V into Q. That is 110 into 8. That is 880 joules of work is done in moving the charge from one point A to point B. So that's it for today. I have covered 2 topics, that is the electric current and the potential difference. If you have any doubt, I am conducting an online class tomorrow at 4. If you have any doubt, you can ask any doubt in numericals or theory. Otherwise, we are going to continue the chapter tomorrow at 4 o'clock. So meet you tomorrow at 4.